the major possible cause in crypto market. It's now we are hearing that in the news channel that Kazakhstan crisis is making the major issues in the energy market and the cryptocurrency market, because the turmoil, the spike they have in their turmoil. That's why, because as we all know, Kazakhstan stands the second largest Bitcoin miner in the world. Okay. And as Kazakhstan is the biggest exporter of the oil, so that's why people are over there, they are just making protesting against the governments. तो बहुत सारे लोग उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि लोग हमारे यहाँ पे सेंटिमेंट लोग सोचते हैं कि अगर बिटकॉइन का माइनर, अगर सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट माइनर अगर कजाकिस्तान है, तो ऐसा हो सकता है कि वहां के लोग अभी माइनिंग ना करें तो हमारे पास क्या होगा ना, लिक्विडिटी ना आए क्रिप्टो करेंसी में। उसकी वजह से क्या होगा ना कि हमारे प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस डाउन साइड में ज्यादा पड़ जाएगी। अभी इसके बाद और एक कॉजेस मुझे क्या लगता है कि लाइक ओमिक्रॉन, अभी इंडिया में लगभग लोग बोलते हैं कि 1 लाख से ज्यादा हमारे पास पेशेंट बढ़ चुके हैं। पीपल आर टेलिंग दैट आई नो आई डोंट नो द फिगर एंड फैक्ट, but people are telling that we have approximately 1 lakh patients of Omicron in the India. So people are feeling like that if Omicron is getting increasing day by day, then the situation will become the actual COVID situation that we have in the 2021. Yeah. People are just scared of that thing, and people are not understanding the actual fundamental of the market. People are just taking the decisions sentimentally. Means if some of my friends, if some of my relative is telling me that, oh, crypto is the burst, crypto is going to burst because crypto is a bubble, so what they give, hey, don't buy crypto, sell your cryptos. The people don't ever see the news, don't ever see the chart. They just go on selling, and the major part they are just helping institutional investors to make money. That's all. Okay. So basically, if I move on to Kevin, I hope we basically agree with what Aakash said, trying to just figure out the sentiment, basically the major sentiment of our population. But in my perspective, it's going a kind of global sentiment, basically. I would just like to add to, like 2 other factors that I think might be affecting it. One was that recent, like the US Federal had that meeting. Yeah, exactly. And the minutes came out, and immediately after that, we have seen, like the market just go for a dip. So basically, like the whole thought process behind that meeting was, like the US inflation is like an all-time high, like from the 1980s. So that is a serious factor. Also, it's contributed, like from the US central bank, because they have been printing money. And even if you see the rate at which they've been printing money, it's gone up from 5% in the 2000s to, like 18% as of last year. So that's, like very high. So another bit was, because of inflation, like the prices of everything have gone up. And that's something that, like we don't have to go to the US, in India as well, like that's a trend that we are seeing right now. Exactly. And I feel what the US, like after the minutes from the federal meeting did come out, what happened is, like everyone has been propping up Bitcoin as like Bitcoin and other cryptocurrencies as an alternative for gold. But, like what happened after that minutes came out was the tech stocks had a, like a massive drop, meaning a maximum of 5 to 6%. That's massive for them. But so this kind of correlated to the Bitcoin and all the cryptocurrency as well. And this kind of, like have also like made people question, are cryptocurrencies actually a stable investment? I don't want to spread any fear, uncertainty or anything, but this is just my observation. Another thing that I think that everyone might have seen or heard, like passing by in the news is the Russia-Ukraine crisis. Yeah, that is the major thing. Yeah, so there's a possibility of an invasion or a war, and like all the global like it's almost an international platform where the NATO and other European countries are also involved. And there's also like talks that like if it does go in a situation like that, like what if, because Russia is a major supplier of oil in in Europe, in like the European markets. So what if that happens? Like that again will like create the crisis. So there's like a lot of uncertainty right now. And just to add to that, from Russia's end, I think just earlier today or yesterday, like the Russian banks said that they're going to ban all activities related to cryptocurrencies. Yeah, they'll only allow like you to hold cryptocurrencies, but you cannot do anything with it. Like there won't be any exchanges or any way to like transact it back.
So it's like a composite of, like when a unique place where there's like a lot of, like uncertainties right now. But I think what we should look as, like Aakash did mention, like we shouldn't be sentimental, right? Yeah, exactly. Meaning it's not something that, like crypto, like in 2 or 3 months, like it's something going to end. Like it's something that, like we have to see long term. So I think that's what we need to like focus on instead of just the sentiments right now. I guess that's what it is basically based upon, the new technology of future and all, the blockchain. इसीलिए इसको bubble तो नहीं कह सकते कम से कम. If we are on one side, if we are saying that it's the new technology and all the banking system will go digitized by this, so we can't just say it is a bubble and it will burst someday. I guess in my perspective is this only. एक और चीज इन दोनों चीजों के बीच में आ रही है. हमने देखा कुछ कंट्रीज के कुछ बैंक्स कह रहे हैं ये करेंगे, कुछ रशिया, यूके, यूएस, एवरीथिंग वर्ल्ड वॉर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है. करेक्ट. सो बेसिकली इन दोनों चीजों के बीच में एक चीज और थोड़ी सी बज हुई थी. आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ द बिटकॉइन डिप, as people just refer cryptocurrency is equal to bitcoin. Yeah. So I guess कहीं ना कहीं क्योंकि सिर्फ बिटकॉइन अगर पहले डिप लेता है तो इसीलिए पूरा का पूरा मार्केट उस सेंटिमेंट को फॉलो करके बाकी क्रिप्टो करेंसीज अपने आप डिप ले लीजिए. क्या इट कैन बी आल्सो अ रीजन, or is just that definitely is a reason, like meaning again, like Bitcoin is something everyone I think recognizes. Someone who is not familiar with crypto, but I think they will know Bitcoin, and like Bitcoin is falling, so definitely that correlation. The strange thing what I have get from the market, when I used to aware people about the cryptocurrency investors, they just ask me one thing, अरे बिटकॉइन ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? मतलब उनको क्या लगता है कि अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो क्रिप्टो करेंसी का पूरा मार्केट ऊपर जाएगा. लेकिन स्टेबल कॉइन्स और अल्टकॉइन्स के बारे में वो चीजें उनको कोरिलेशंस पता नहीं है. That's the jumbled thing they have just fighting together. So I guess Also, I think it's kind of like Bitcoin is a North Star because that like if someone new enters the crypto market, right, they'll be flooded with like some 11 or 16,000 coins. Like exactly. So Bitcoin is like the North Star key. Like how is like we look at this and this is what we're going to follow. Yeah, exactly. And it is still a dominant coin in the market. That's why I guess the sentiment goes to that trail. That अगर Bitcoin जा रहा है तो yes, बाकी सब भी जाएंगे, and people are following the same sentiment as Bitcoin is like dipping or going up. That's also like if I will compare, right? Meaning in the I think in the 60s or 70s, like there was this gold standard for currencies, right? Currencies, right? So all currencies were backed by gold. And if the prices of gold did fall, like the currency's value also would fall, right? So that was the reason for it to go to fiat. Like we are still in that, like in that space where crypto is growing, but yes, like we need to piggyback on Bitcoin. Keep that momentum, but eventually we're going to go independent. It has been called an asset, like correct. The major thing what I think about the crypto market, some people are dominating. Like we can take an example that it's a tug of war between the retail and the institutional traders and investors. Correct. Yes. What exactly is happening? कि यार ये institutional companies, traders क्या कर रहे हैं, investors क्या कर रहे हैं, ऐसी कुछ situations create कर रहे हैं ना कि हमारे जैसे छोटे traders, investors की ना पैनिकनेस को बढ़ा सके. जैसे कि अभी यूएस का चलो भाई बैंक रेट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, तो लोग क्या करेंगे, अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो भाई पैसा क्या करेंगे, मार्केट से पैसा निकाल के क्या करेंगे, उसको एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, अभी इंडियन मार्केट की आप हालत देखो. ऐसा किसने कहा है कि सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही गिरता है? भाई इंडियन मार्केट में देखो पूरा रेड ब्रेड चल रहा था. हाँ, ऐसी कौन सी ऐसा कौन सा मार्केट है जो वन स्पाइक ऊपर जा रहा है? अगर मैंने एक डेटा निकाला है, अगर आप चेक करोगे तो अगर बीटीसी के एग्जांपल ले लेते, बीटीसी के अगर एग्जांपल ले लेते कि अगर मैंने एक एग्जांपल क्या लिखा कि अगर मार्च 2020 में अगर आप देखोगे, मार्च 2020 में अगर आप देखोगे बिटकॉइन तभी भी मैसिवली फॉल हुआ था. लेकिन उसके बाद से जो स्पाइक आया 45% का डाउनफॉल था, लेकिन उसके बाद से जो फॉल आया दैट वाज स्पाइक जो था वो अपर साइड में दैट वाज 130%. जस्ट इमेजिन गाइस कि अगर 45% गिर के अगर बिटकॉइन वापस 130% गेन हो सकता है तो भाई वो 130% गिर के 1030% भी बढ़ सकता है. But no one speaks about that. it's like a demand and supply. Everything is dependent on that only. और हमारे पास क्या है ना, अभी we are on the YouTube live stream, but कुछ चीजें हमारे पास ऐसी है कि people are just making that this is a pump and dump वाला स्कीम. नहीं क्या यार आप एक काम करो, ये क्रिप्टो बाय करो, इसमें से आपको नहीं क्या, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज के बारे में अवेयर हो. लोग क्या चाहते हैं कि भाई आज हमने किसी क्रिप्टो का बाय कर लिया तो 2 दिन में भाई मैं राजा बन रहा हूँ.
because it Yeah, has been that's a referred very from the long. initial That stage again like this then only. links back to the sentiment. You know, like you Yeah. lose $100 and then you're like, okay, I need to cash out. भाई मतलब मैं मर्सिडीज बुक कर रहा हूँ, मतलब मेरे तो ऐसे दोस्त है कुछ कि लिटरली यार भाई शिबा ले लिया मैंने, भाई अगले साल तो अपना विला फिक्स है, ये कौन सी बात है यार? ये सब चीज कुछ चीजें हैं। आई गेस ये इमेज क्रिप्टो करेंसी की बहुत इनिशियल फेज से ही बनी हुई है, और खासकर जब एक बड़ा पीक आया था बीच में when it started, तो ये इमेज तभी से बनी हुई है, and people are just referring to the same image currently they are referring to the same image, but they are not understanding that this market is also getting matured day by day, and ये कहीं ना कहीं आके stability लेगी, और अगर आप 130% का profit expect करते हैं तो आप 45% का dip भी तो expect करिए। Exactly, it's a give and take policy. Market भी लेता है भाई, obviously. So with this we'll move on to the next question and we'll go into detail. I want to hear in detail about this Kazakhstan's energy problem from you guys. Okay, so and how it basically contributed to the pressure in the market. So we'll start with Kevin. Yeah. So basically, like meaning, you know, like if you look at Kazakhstan at, you know, like in 2020, like they were nowhere on the map with like anything to do with Bitcoin mining. But in 2021, then, you know, like China goes around and bans all mining and you know, related to Bitcoin and other cryptocurrencies. And then you see a spike of, you know, like people moving to the location. One thing is because it's nearby, it's just next to China. Other thing is it's a very cheap electricity over there. Exactly. So then, you know, like later in 2021, then the government, you know, like realizes, you know, like there's like a certain spike in, you know, like energy uptake. Like previously this wouldn't happen. Okay. And, you know, like they, I think they also introduced a tax that would, you know, like, kind of, you know, like make it very difficult to mine because, again, because it's a very like a low margin sector, right? Like how do you tax someone for using electricity if there's no tangible output of it? So that was another bit. So then the government did introduce the tax. So that was like the first barrier. Then just a few months later, then, you know, like the energy ministry of, I think, Kazakhstan, they introduced, you know, like certain limits that you can use, you know, like you can use up to like 1 megawatt per mine, and you know, like 100 megawatts for the whole country. So, you know, like that, again, that restriction kind of, you know, brings down, you know, like how much we can then focus on. Then meaning like I don't think, you know, like what's happening now is anything to do with the mining sector, because the government also fumbled and, you know, like the prices of LPG and other, you know, like energies also like kind of increased. So then, so the protest that initially happened for the energy thing, like it turned into a political one. Then people started asking for more. And that's how, you know, like it came on to the mining bit. So I think what we see is like then there has been like multiple internet shutdowns as well in Kazakhstan, which, you know, like impacted the hash rates of again, like impacting the liquidity as well. So I think I think that's what, like it's been like a domino effect over there. It has, so Aakash, your views on the same. First, I want to tell both of you guys that I don't know why I'm getting this feeling that complete world is making a bear and bull game. because just imagine, guys, because last year US has some news that impacted on cryptocurrency, that we were saying that, oh, my Bitcoin is getting spiked, Bitcoin is getting going down and down. But now this year, just imagine करो भाई कि चाइना ने एक बार बोल दिया कि भाई हम BTC एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है? तो कजाकिस्तान ये चाइना के पास में, ठीक है? अभी कजाकिस्तान में क्या है ना, बिजली को टैक्स नहीं भरना पड़ता था, ठीक है? अभी माइनर्स को क्या चाहिए? माइनर्स के लिए हमारा इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिसिटी, हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमारा पैसा है। तो क्या कर दिया ना, गवर्नमेंट ने मोनोपोली क्रिएट कर दी कि भाई जितनी भी अच्छे बड़े माइनर्स है, जिनके पास अच्छा पैसा पड़ा, आ जाओ हमारे पास आके हमारी कंट्री के साथ माइनिंग स्टार्ट कर दो। एक मोनोपोली बिल्ड कर दी, नहीं क्या? हाँ, तो सब अच्छे माइनर्स आए, उनके कंट्री के माइनर्स को। अभी जिस तरीके से माइनर्स की क्वांटिटी या फिर आप लिक्विडिटी बोल सकते हो बढ़ गई, लेकिन अभी कंट्री को दिक्कत क्या हो गई ना कि एक्सपेक्ट दैट कंट्री इज सप्लाइंग
नॉट जस्ट दैट कंपनी इज मेकिंग ओनली डिमांड, बट सप्लाई तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है ना। करेक्ट। अभी बीटीसी के जो वो मार्केट वॉल्यूम है, अगर या मार्केट कैप बोलोगे या फिर आप सप्लाई बोलोगे, तो अब उतना सप्लाई बचा नहीं है। और कुछ अभी बिटकॉइन के कंपेयर में अगर आप देखोगे तो ऐसे आज एनएफटीज को, मेटावर्स को ले लो, अगर कुछ महीने पहले से आप देखोगे तो इसको एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अभी जैसे मैंने आपका ट्रेलर देखा था, आपने बोला था कि टू जाइंट्स इंस्टाग्राम एंड फेसबुक नाउ दे ऑल आर कमिंग विद न्यू टेक्नोलॉजीज। अभी कजाकिस्तान ने क्या किया, उनके पास रीजन ही था, तो उनके पास बड़ा सोर्स क्या है, एनर्जी। उनके पास एनर्जी क्या सोर्स है, दे आर दी 40% मेजर सप्लाई ऑफ एनर्जीज। तो उसके वजह से क्या हो गया ना, क्योंकि हमको पता है कि पूरा मार्केट इंटरलिंक्ड है, ना क्रिप्टो अलग है, ना स्टॉक मार्केट अलग है, ना कमोडिटी अलग है, ना फॉरेक्स अलग है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, बिकॉज वी आर इनटू फाइनेंशियल मार्केट। अगर किसी एक मार्केट को भी हम हिला पाए ना, तो इतना तो हम सेंटिमेंट इन्वेस्टर का बिल्ड कर लेते हैं, भाई एक मार्केट गिर रहा है तो ये एक चुनौती है, सो ये आपके लिए अलर्टनेस है, सोचो। तो इसकी वजह से क्या होता है, कजाकिस्तान ने वो मोनोपोली को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या कर दिया ना कि प्राइसेस बढ़ा दिए ऑयल्स के, तो वहां के गवर्नमेंट, वहां के लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। अभी हमें ही पता है भाई कि अगर हमारे कंट्री में कोई चीज को लेकर प्रोटेस्ट होती है, तो पब्लिक अपना जब तक डिमांड, जैसे कि हमारे पास भी कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो पब्लिक नहीं चाहेगी ना कि हमारे मांगे पूरी हो, तब जाके हम उसको रोकेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया ना, Russia has gotten point to involve in this thing, because you know Russia is making the intermonopoly in all the entire world. They want that their country should be powerful in all aspects. I know. तो ये सब चीजें मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगती है कि ये interlinked है, बस ये Actually, just adding that, when the protest did happen, Russia did send paratroopers to disperse the protest. Yeah, exactly. The Russian police, militaries were having the police to control the protest. तो ये ऐसा कुछ ऐसा लगता है मुझे। So there's like a very huge geopolitical, also like I would like to add, like if you take like a tech stock like like Tesla or something, like it's only like limited to like one region, like you can only trade it in the US markets, right? Bitcoin is something that you can trade like globally. So like we have to expect like if something happens any part of the globe, like there will be like ripples everywhere, unlike something that's like in a closed market. I guess the sentiment is also decentralized now. That is true. This should be, guys. This should be, guys. Yeah. Okay. So moving on to the next question, it's like impact of recent cracking down on crypto by various countries. I guess we are just revolving around the same question, because only these are the questions which are here to be resolved or to be get cleared. क्योंकि जैसे अभी हमने कजाकिस्तान की बात करी, उससे पहले हमने और कॉजेस की बात करी, जिसमें ऑलरेडी हमने कजाकिस्तान का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, एंड वी आर ऑलरेडी रिवॉल्विंग अराउंड दिस, क्योंकि इसके अलावा बाहर कुछ नहीं है। यही सारे रीजंस हैं क्रैश के, यही सब रीजंस हैं। बट व्हाट वी आर ट्राइंग हियर इन दिस सेशन, लाइक हम थोड़ा सा ज्यादा और इजी शब्दों में अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा और क्लैरिटी दे पाएं। सो दैट्स व्हाई अ सेम क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द same bucket, I guess. Impact of recent cracking down on crypto by various countries. हम country wise एक बार जानना चाहेंगे आपसे कि किस किस तरह के impacts पड़े हैं individual countries के, अगर perspective में अगर देखा जाए, as you have mentioned many name of countries थोड़ी देर पहले ही, so I just want to know कि कैसे हम individually उसको अगर देखें, segregate करें या फिर individually देखें कि कैसे एक individual एक इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे यूएस की बात करें, रशिया की बात करें, कजाकिस्तान की हम कर चुके हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स कमिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज, वी जस्ट वांट टू नो। आकाश, the major part ki US is involvement is getting more for the inflation rates. Okay. Bank rate, the bank interest rate. एक चीज मैं आपको यूजर्स को बताना चाहूंगा कि एक चीज आप समझ लो, मार्केट का पूरा जो फैक्टर है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अभी अगर आप इंडियन मार्केट को देखोगे तो पिछले साल सबसे ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हमारे मार्केट में हुई थी ओवरऑल ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, तो जैसे ही यूएस ने बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो क्या हो गया ना, वहां पे क्या महंगाई दर, सीधी भाषा में मैं ऐसा बोल सकते हैं कि वहां की महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ गई तो लोगों को क्या हो गया ना, गुजारा करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट बढ़ गई वहां के, क्योंकि यूएस इज द कॉस्टली कंट्री, राइट। और तो ये लोगों ने क्या किया ना, अपने एसेट्स किसमें है, लोगों के एसेट्स है कि भाई किसी एनर्जी मार्केट में डाल के रखी हुई है, कोई भाई क्रिप्टो में डाल कर रखा है, किसी ने स्टॉक में डाल कर रखा है। तो क्रिप्टो में से जो वॉल्यूम था वो क्या लोगों ने क्या किया, वहां से निकलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वहां से इन्वेस्टमेंट निकलने के बाद क्या हो गया ना कि भाई इट्स ऑल अबाउट लिक्विडिटी। अगर आपका
डिमांड कम होता है और अगर आपका सप्लाई चेन ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका प्राइस घटना ही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो कि अगर कोई एक चीज आप खरीदने जा रहे हो जिसकी डिमांड ही नहीं है, जिसकी डिमांड कम हो रही है किसी ना किसी रीजन की वजह से। अभी यूएस ने, मैं लास्ट टाइम हमारी जो अभी हमारे कुछ ग्रुप डिस्कशंस हुए थे रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन रेट। अभी लोगों को लगता है भी, अगर हमारे इंडिया की बात करो आप, अभी हमारे पास लोगों को लगता है कि वी आर हैविंग अप्रोक्सीमेटली इन्फ्लेशन रेट ऑफ 6.5%। ऐसा नहीं है भाई। आप इन्फ्लेशन रेट कब उसको कैसे गिन सकते हो कि अगर आप जो कमा रहे हो, आप कमाने के बाद जब एक्सपेंसेस सब निकलने के बाद आपका सेविंग बचता है, प्लस इन्फ्लेशन इज योर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट। तो अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन रेट इज 12 to 13% ऑफ इंडिया, लेकिन लोग उसको क्या बोल रहे हैं भाई, 6.5%। तो उस कंपैरिजन में यूएस इज द मेजर कंट्री, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इफ यूएस इज मेकिंग बैंक रेट्स हायर, तो obviously the global investment what people are having in the different market, that will come up to their pocket only. Second thing, China, as we know, one of company like Bitmine, right, the largest miner company in the world. Okay. तो पहले क्या हुआ, चाइना को क्रिप्टो लवर कंट्री की तरह देखा जाता था, ठीक है। तो हमारे लोगों की देखो भाई बात आ जाके वहीं आने वाली सेंटिमेंट्स या कुछ फंडामेंटल फैक्टर भी ले लेते हैं अभी इसके बीच में कि पीपल आर अवेयर दैट कि भाई चाइना इज द क्रिप्टो लवर कंट्री एंड चाइना वांट्स दैट देयर कंप्लीट पॉपुलेशन शुड एंगेज इन द क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। They just want to accept the crypto transactions, banking, everything. तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, जब जैसे ही इतनी बड़ी कंपनी अगर माइनिंग कर रही थी, अगर उस कंपनी को बंद किया जा सकता है, तो चाइना ने क्या कर दिया कि भाई वहां से भी डिमांड कम कर दिया। लोगों की ट्रस्ट जो एक मोनोपोली क्रिएट हो गई थी ना कि भाई इफ चाइना पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है आज के डेट में, अगर इंडिया से भी कोई पॉपुलेशन में तो चाइना है। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री अगर बोल रही है कि क्रिप्टो करेंसी हम यहाँ पे बैन करेंगे, आप यूज नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा फिर? ऑब्वियसली लोग यही समझेंगे ना क्योंकि चाइना इज वर्किंग एज द किंग, यू नो, इज द डोमिनेटिंग, creating a monopoly again, global monopoly, correct. So these are the things. अभी रशिया की बात करो तो बस रशिया तो जस्ट मेकिंग दी, बोलते ना हमारे जगह से नाक घुसड़ने का काम चल रहा है कि भाई कजाकिस्तान को देखा है, कजाकिस्तान का भी ले लेते और क्रिप्टो के ऊपर और कुछ करके हमारा कंट्री को कुछ और सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मार्केट में और एनर्जी कम हो जाएगी, हमारे पास सप्लाई डिमांड्स आ जाएंगे तो हम उसको सप्लाई कर देंगे। These all are things are happening in this all different countries. Okay. Kevin, do you agree with Aakash or do you have certain another points to mention? Definitely, but I think I will just sum up, like what the whole psychology is behind, like banning. So, as humans, like we are people who want validation, right? We want validation for our parents. We do something, we want them to say, okay, this is done. So in the same way, like meaning the citizens, they want validation from the government. They're not looking at key, like there's decentralization, there's benefits of decentralization. They're more worried about, like okay, if the government says okay, then it's okay to use these things. Otherwise, what happens with that is, right, so if the government says this is wrong, so then the whole association of cryptocurrencies, right, you link it with like all like the illegal activities, like it's like for drugs, use it for terrorism. So like that kind of also like someone who might have like entered the market looking at this, like why should I take a risk, right? So they would exert it. Another thing is obviously like it creates the FUD, so that's like that's like a given. So so when like like you create like an FUD, like it puts stress on like both the people as well as infrastructure. Like we don't have to go so far. Like in 2016 there was demonetization. We know what we did, right? We like we were standing in lines for the ATMs. The banks were already like they were like the frontline workers, so they were like already stressed out. So that's another thing that like creates that negativity as well. And obviously then once there's stress on infrastructures, then the stress on the hash rates, the stress on the liquidity, and even like I guess like say you still have cryptocurrency in your country, like for example the people in Russia now, they can hold cryptocurrency, but now if they want to like do something with it, the cost of like transacting it will be much higher because they have to do it in some other country. The cross-border transactions will apply there. So that kind of like discourages people from like pursuing this further. So but I would like to mention like
the governments have no control over cryptocurrency because that's the like the salient point of decentralization. Like they cannot control it. Exactly. Okay. So I guess इसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा आ गई होगी हमारे व्यूअर्स को, और हमें खुद भी पर्सनली मेरे को भी काफी क्लैरिटी मिली है. ओके, थोड़ा सा नैरो करते हैं इस टॉपिक को और ज्यादा, और चलते हैं एक प्रॉपर इसमें पूछता हूँ आपसे मैं कि how are these meme coins, these Shiba Inu and DOGE are contributing to the crash? Aakash, will start with you as you are already laughing. Guys, देखो मैं क्यों हंस रहा हूँ, because अभी हमारे इंडियंस लोग आज सब अटेंड कर रहे हैं. No, do they contribute to the crash? Basically, my to ask is related. देखो भाई, इनका क्रैश और मार्केट क्रैश अलग है. Okay. ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा. ठीक है, इनका क्रैश और मार्केट का क्रैश अलग है. देखो, एक चीज मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ. भाई आपको शिबा कब मालूम पड़ा? लोगों को एग्जांपल शिबा कब मालूम पड़ा कि भाई इथेरियम के फाउंडर ने इंडिया में कोविड रिलीफ फंड दिया है, सो मच ऑफ अमाउंट. तो जो दिया गया था वो एक क्रिप्टो था. कौन सा था? शिबा इनु. अरे यार, विटालिक फाउंडर ऑफ इथेरियम, लो खरीदो. विटालिक ने किया भाई. विटालिक को इन्होंने क्या कर दिया? उनको ऐसा लगा कि शिबा को गोद में ले लिया. मैं अभी विटालिक ने लिखा बोल दिया है तो ये पक्का सबको करोड़पति बनाएगा. ठीक है. Also, I was just want to build up on that. Was like this is just following the DOGE wala craze. So they were like, there's another token, so this is my chance to become rich. And like Aakash could continue. Guys, Kevin, मैं आज बहुत सारे लोगों को एक चीज पता नहीं होगी. The founder of Dogecoin. गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. आप इन सब चीजों से सोच समझ के अपने डिसीजंस को लिया करिए कि द फाउंडर ऑफ Dogecoin, उसने $10,000 की कुछ चीज, एक कार खरीदने के लिए, आई डोंट नो व्हाट, उसने अपने पूरे एसेट्स को बेच दिया था Dogecoin के. अगर खुद फाउंडर अपने एसेट्स, अपने जिस टोकन को उसने बनाया, जिस क्रिप्टो को उसने मार्केट में लाया, अगर वो खुद होके पूरा अपना सप्लाई बेच सकता है गाइस, तो दिस इज नॉट एन टेक्नोलॉजी. इसको प्लानिंग नहीं बोलते, इसको यूजेबिलिटी नहीं बोल सकते. देखो, मैं बोल रहा हूं कि शिबा इनु नहीं, आप फंडामेंटल स्टडीज किया करो. आप चार्ट को देखो, आप कॉइन मार्केट कैप को देखो. भाई कॉइन मार्केट कैप एक एक्सचेंज की तरह है भाई, जहां पे अगर टॉप 100 में कोई कॉइन आपका लिस्टेड है ना, तो समझ लो भाई आज उसका प्राइस कम हो सकता है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि उसकी यूजेबिलिटी ये लाइफ लॉन्ग रहेगी. कंसिस्टेंटली मार्केट में उसके एक्सपेक्टेशंस रहेंगे. अभी जैसे कि रिपल है, मैं रिपल को बहुत, आई एम ए रिपल लवर. क्यों? बिकॉज इट्स उसके पीछे, उसको मार्केट में लाने के पीछे एक सिंपल रीजन है कि भाई बैंकिंग के लिए यूज होने वाला है. अभी एक चीज जान लो भाई, बैंकिंग के बिना तो हमारे ट्रांजेक्शन होते नहीं है. तो एक बात बताओ, अगर बैंकिंग के बिना, अगर रिकल ऐसा फ्यूचर में अगर बैंकिंग टू बैंकिंग में अगर रिपल को यूज किया जाए, तो आपका पैसा क्यों डूबेगा? करेक्ट. और आप क्रिप्टो को ऐसा मत समझो कि भाई ये रातों रात करोड़पति बनाने वाला कोई जरिया है. गाइस, I'm really sorry, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बिकॉज आज केविन है यहाँ पे, we all are from the same industry. यहाँ हम लोगों को देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. गाइस, क्रिप्टो को एसेट्स की तरह देखो. आप कोई जमीन खरीदने चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो, आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखते हो, आप उसके रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल्स को क्रॉस वेरीफाई करते हो, एग्जामिन करते हो. तो भाई क्रिप्टो भी उसी तरह की से है. डॉजकॉइन, शिबा, ये क्रिप्टो नहीं है गाइस. आपको पहले ये पता होना चाहिए टोकन क्या होता है, कॉइन क्या होता है, एनएफटी क्या होता है, मेटावर्स क्या होता है. आपको डिफरेंस नहीं पता है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है. हम वही चाहते हैं कि देखो, क्रिप्टो मेरे लिए, हमारे लिए तो एक न्यू ट्रेंड ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वी ऑल आर बिलोंगिंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजी. आज अगर इतने बड़े बड़े जाइंट, जैसे तुषार ने मेंशन किया था, अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक जिस फेसबुक को डेवलप करने से पहले अगर उसने फेसबुक एक ब्रांड नेम दिया था, अगर उस ब्रांड नेम को चेंज करके और मेटा करता है, तो उसके पीछे कुछ रीजन है. वो चाहता है कि टेक्नोलॉजी को इजी बनाया जाए, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया, अगर आप देखोगे, अगर एनएफटी, नॉन फ्यूजिबल टोकन क्या है भाई, किसी भी डिजिटलाइज चीजों को आप टोकनाइज करो ब्लॉकचेन पे. जैसे कि आप म्यूजिक को करो, आप एल्बम्स को करो, आप इमेजेस को करो, आप गेमिंग्स को करो. तो भाई फेसबुक क्या चाहता है कि हम एक दूसरे के अंदर ही एक क्रिप्टो लवर बन जाए. कोई बना रहा है तो कोई खरीदेगा भी, कोई बेचेगा भी. ठीक है. शिबा इनु भाई पंप एंड डंप वाला सीन है, सीधा बोल देता हूँ. मैं कभी छुपाता नहीं, बिकॉज गाइस, पीपल आर लूजिंग मनी. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई
लोग क्या करते हैं ना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, केविन, व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन आवर कंट्री? आर पीपल डोंट नो द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ मार्केट. That is true. When the entire world is go on the downside, our people sees the up. Oh my God, अब तो साला अंदर घुसने का टाइम आ गया. Then when they comes to up, then market is going down. But let's make okay, Aakash, let's make a bit sugar-coated statement for the viewers, so that it's like, okay, उनको और clarity चाहिए. They should read the charts. They should know कि ऐसे सिर्फ सेंटिमेंट्स के बेसिस पे कोई भी मीम कॉइन, कोई नया मीम कॉइन कल को आता है, या फिर अभी करंटली देखें शिबा है या डॉजी है या और कोई कॉइन है, तो उनको सिर्फ अपने सेंटिमेंट्स या ग्लोबल सेंटिमेंट देखते हुए नहीं डाल देना है अपना हार्ड अर्न मनी किसी भी रोक में. सो जस्ट मेकिंग अ शुगर कोटेड स्टेटमेंट फॉर यू गाइस कि इस तरीके से आप अगर करेंगे तो देयर आर मोर चांसेस कि आप लूज करें वो मनी, rather than जब आप पढ़कर अपना रिसर्च खुद करके एंड प्रॉपर रिसर्च के साथ when you start investing, you will yourself see that you are gaining somewhere. Obviously, no doubt. And one more thing, Tushar, I want to mention that now in India, I don't know you are aware of that or not, Kevin, or you both. Now, people are making crypto in the marketing, network marketing things. Yeah. Have you heard about this? कि भाई आप इतना का पैकेज बेचो, उसको इतना का इतना मिलेगा और आपको इतना का इतना मिलेगा. भाई अगर आप टेक्नोलॉजी को एमएलएम के साथ जोड़ रहे हो तो वो आपका पैसा डुबाने ही वाला है गॉड गाइस, क्योंकि वहां पे पंप एंड डंप भी होने वाला, हमें भी पता है, सीधा हिसाब है भाई. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस कि तुषार ने जैसा मेंशन किया, स्टडी करो, बिकॉज देखो भाई पैसा ये ऐसे आने वाला चीज नहीं है. जैसे अब इंडियन मार्केट के वो आप जब देखते हो तो आप कंपनी का स्टॉक ऐसे उठा लेते हो ना, आप उसके बैलेंस शीट को चेक करते हो, आप उनके मैनेजमेंट देखते हो कि मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है, उनकी फ्यूचर प्लान्स क्या है, एक्सपेंशंस क्या है, एंडोर्समेंट्स क्या है, ठीक है, उनके अपकमिंग प्रोजेक्शंस क्या है बिजनेस को लेकर. तो भाई अगर आप जैसे कि रिपल, अगर आप रिपल से पैसा कमाना चाहते हो ना, गो ऑन द रिपल फंडामेंटल्स थिंग्स, कि यार रिपल व्हाट दे आर मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी, हाउ दे आर क्रिएटिंग देयर मोर यूजेबिलिटी इन द मार्केट. इस चीज को आप स्टडी करो, क्योंकि क्रिप्टो ऐसा कोई क्रिप्टो नहीं है जो आपको डुबा सकता है. हम अपने सेंटिमेंट्स के वजह से और हम अपने कुछ अवेयरनेस हमारे पास नहीं है, या फिर हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जहां से हम, तो आप स्टडी करोगे तो आपको वो टूल्स भी मिल जाएंगे. जैसे कि अभी कॉइन मार्केट कैप है, बिकॉज इट्स लाइक एन एजुकेशन हब, आप वहां पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप उस चीज को रेफर करो, रेफर करके, और रेफर करना इन द सेंस क्या है, आपको डिमांड और सप्लाई देखना है कि भाई ये लोग कुछ डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अभी मैं लेके खरीद देता हूं तो ये आने जाके फिर प्राइस बढ़ने वाला है. इट्स अ सिंपल लॉजिक. या सो हाँ आई गेस अब बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो गई होगी यूजर्स को कि कैसे क्या और कब करना है, और विदाउट रिसर्च कुछ नहीं करना है, सिवाय सिर्फ ये देखते हुए कि किसी बड़े एक जैसे फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने कुछ बोल दिया तो यार यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन सम मीम कॉइन एंड ऑल. तो आपको ऐसे नहीं करना है, जस्ट बी अ रिसर्च बैक्ड individual and then invest. Okay, so we were talking about Shiba Inu. So here's a question coming for you for Shiba. Okay, Shiba, will it reach ₹1? Oh my God, the most valued question on earth, not in India. Yeah, actually, global question. Yeah, we'll start with Kevin. Kevin. I won't stay away from what Aakash mentioned. Like, I will again emphasize that, like, educate yourself, look at the fundamentals, and only if even after those two you still want to invest, just invest money you're okay with losing with. Like, so I would like stress again. People really want to know about this Shiba Inu ₹1 peaking towards ₹1. That said, just to entertain the person, like, I would say that I have like gone through, like, comparing with other meme tokens. I would say Shiba does have like they have a legitimate roadmap. They have opened like swaps. They are also going to metaverse. But don't take my word and like invest into it. Still do your research and everything. But like again, it's just a meme token. Like, if tomorrow it pumps, it might go to 1, or it might also lose all its value. So again, I will just stress, educate yourself, fundamentals, and also if you're even after those two, just put your money that you can afford to lose. Okay, yeah, that's a good advice. Okay, so Aakash, a direct question to you.
when will we can expect the market to recover? Market will recover. मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को रिकवर होने की जरूरत नहीं है. आप ग्राफ पे अगर देखोगे, आपको बाहर भी देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट और आई एम अ टेक्निकल एनालिसिस लवर. देखो भाई, अगर आप ग्राफ को देखते हो, अभी जैसे मैंने बोला कि भाई बिटकॉइन का ये पहला फॉल नहीं था, ये क्रिप्टो मार्केट का ये पहला फॉल नहीं था. क्योंकि देखो, अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, एंगेजमेंट्स आ रही है, तो मार्केट विल गो अप. लेकिन कुछ लोगों के हाथ से जो चांस मिस हो गया है मार्केट के अंदर आने का, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स करने का, ट्रेडिंग करने का, तो अगर मार्केट का प्राइस, अगर मार्केट का जो फीड है उसका प्राइस हाई रहेगा, तो हमारे पास न्यू इन्वेस्टर्स के एंगेजमेंट्स कैसे आएंगे? करेक्ट. तो मार्केट को अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, अपना डिमांड सप्लाई जोन मेंटेन करने के लिए, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट आकाश, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. या तो एक बार उसको आप हिंदी में भी एक्सप्लेन करिए प्लीज. आई जस्ट वांट तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, अगर मार्केट अगर कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, अभी फॉर एग्जांपल तुषार ने, अगर मैं मान लेता हूँ रिपल को, अगर समझो फॉर एग्जांपल इंडियन आईएनआर में पकड़ 10 रुपए में खरीद लिया, ठीक है, तो अभी शिबा बोल रहा हूँ यार, आई एम सो सॉरी, शिबा मेरे दिमाग में आ रहा है, ज्यादा सीरियसली मत लेना, मैं बोल रहा हूँ रिपल के बारे में. तो अभी मान लो कि अगर रिपल खरीद लिया, अभी रिपल का प्राइस चल रहा है 20, 25, 30, 40 तक जाके आ गया, ठीक है, लेकिन आई एम द गाय कि मुझे अभी पता चला है कि रिपल में चांसेस है कि रिपल विल गो अप टू 50 रुपीज, 100 रुपीज. बट दी what is my choice की exactly what price I want, कि वो प्राइस अभी आया नहीं है. देखो भाई, मार्केट को बने रहने के लिए स्टेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी है, तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है करेक्शंस करके. अभी जिस तरह से कोविड में इंडियन मार्केट, सारे मार्केट फॉल हुए थे, ऐसा हुआ कि वो मार्केट रिकवर नहीं हुआ? हो गया ना, मार्केट रिकवर करके. अभी जैसे मैंने बिटकॉइन का रीजन दिया, अगर आप मार्च 2020 का एग्जांपल ले लो, मैं डेट मेंशन कर रहा हूं, आप सब लोग आज जाके चार्ट पे देख लेना गाइस. 9 मार्च 2020, 9 मार्च 2020 बिटकॉइन में अप्रोक्सीमेटली 45% का फॉल था. लेकिन अगर वहां पे अगर आप सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करोगे या सपोर्ट जोन को ड्रॉ करोगे, उसके बाद का जो स्पाइक था, दैट वाज 130% गाइस. तो ये कब हुआ? जब वो नीचे आया, आने के बाद क्या होगा ना, नए लोग मार्केट में आने लगे, वॉल्यूम्स बढ़ा, लिक्विडिटी बढ़ चुकी है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, उसकी वजह से क्या हो गया ना, वहां से मार्केट की ग्रोथ स्पाइक हुआ 130%. तो मैं ये सोचता हूँ गाइस, अगर आज मार्केट हमारा अप्रोक्सीमेटली, क्रिप्टो मार्केट को मैंने स्टडी किया कल, तो 49% का ओवरऑल मार्केट क्रैश हुआ. क्रैश नहीं हुआ है, हम इसको करेक्शन बोल सकते हैं. गाइस, क्रैश नाम की कोई चीज नहीं होती. क्रैश आप कब बोल सकते हो? जब आपका पैसा, जैसे कि क्रूड ऑयल माइनस में ट्रेड हो रहा था एट द 2020 लॉकडाउन, तब आप उसको बोल सकते हो दैट वाज अ क्रैश. क्रैश आप कब बोल सकते हो? जब कोई भी स्क्रिप्ट को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को माइनस में ट्रेड करोगे, दैट इज अ क्रैश. ये करेक्शन है गाइस. दिस इज इट्स अ कंप्लीट सिग्नल, इट्स अ कंप्लीट अलर्ट दैट न्यू इन्वेस्टर, यू गेट रेडी फॉर द एक्शन, यू आर हियर टू कम. सो भाई, अगर अभी 49% अगर मार्केट गिरा है, तो आई एम श्योर, ये मेरा ट्रस्ट है, मेरा कॉन्फिडेंस है, 490% आने वाले समय मार्केट आएगा प्लस में. And yeah guys, having said this is not a financial advice. It's not a financial advisor. It's मैं डिस्क्लेमर डाल देते कि इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. मार्केट के साथ भाई हम अपने रिव्यूज को शेयर कर रहे हैं. बस हम यही चाहते हैं कि आप मार्केट को समझो, कि मार्केट किस तरह से चलता है, मार्केट किस तरह से रन होता है. क्योंकि आप प्लीज अपने सेंटिमेंट्स के वजह से अपने पैसों को लूज मत करो, बिकॉज एवरी मनी इट्स हार्ड अर्न मनी. We want that everyone should earn from that. और अगर आप earning तभी कर पाओगे when you will get learning from this market. It's a complete system. And I guess even Bitcoin will take some time, if we can't say it's a crash, okay, going by the same term, correction, Bitcoin will still take some time to be at some peak where we have seen it earlier, I guess. But I think the main takeaway from this point will be, meaning since 2020 the market has been on the rise. So I think, as Aakash said, it's also, like it makes sense to have correction. Also, I think meaning there's also like the psychological support that is also created for like exactly. the key currencies. So that's like the main takeaway point that I think we should focus on, instead of like calling it a crash. Because if you compare Bitcoin from like right after 2018, like what it was in 2018, and now like after the 2017 wala crash, and now, meaning I wouldn't call it crash, correction. So meaning you can see like like the growth is very
meaning it has a very credible growth. Okay. And guys, don't compare crypto market with Bitcoin because market is very big. Yes. अगर आप coin market cap देखोगे, you will got n number of tokens, n number of NFTs and blah blah everything. So just make one thing in mind. We all know that Bitcoin is a mother cryptocurrency, but every individual token, every individual coin has its own establishment, its own liquidity, its own usability, its own demand, and its own supply in the market. So just see over that. और जहां तक मुझे लगता है market will recover on its demand and zone supply. Just make a correction on your chart. आप चार्ट को देखो कि भाई उस आज जो सपोर्ट में वो खड़ा है उसके पिछले वाला सपोर्ट का लेवल क्या है, तो उस लेवल को अगर वो मैच होता है उस लेवल से भाई आप ये अंदाज लगा सकते हो कि भाई यहां से मार्केट उठने के चांसेस है. क्योंकि भाई मार्केट अगर गिरा है गाइस, एक चीज समझ लो, मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन इट्स मेकिंग इट स्टेबिलिटी इन द मार्केट. बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा था कि बिटकॉइन बढ़ रहा है इसका यानी मार्केट अभी बबल आउट होगा, मार्केट में बिटकॉइन फट जाएगा, मार्केट में बिटकॉइन नहीं रहेगा मार्केट में. तो इस चीज को देखो मार्केट भी एक इट्स सेम टेंडेंसी. तो इट्स जस्ट मेकिंग इट्स इक्विलिब्रियम. इसको एक टर्म यूज कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम. करेक्ट. Okay, so I guess we are good for now, but before signing off, I would like you both to summarize today's session or points for the major clarity points so that they remember, the viewers remember after going from here, that what all we discussed today. Just a brief. We'll start with Aakash again. So guys, today we have discussed that the causes of the crypto crisis. From today onwards, guys, I am requesting you, don't use crashes. मार्केट में करेक्शंस होती है तो प्लीज आप इस वर्ड को करेक्शंस कर लो. और गाइस, करेक्शंस ऑलवेज कम विद द न्यू अपॉर्चुनिटी. बिकॉज when it's एक समझ लो गाइस, करेक्शन ऑलवेज कम्स विद द न्यू अपॉर्चुनिटी. जस्ट ट्राई टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. Okay, and I know, and you also know that many things in the market is going on. Like Tushar has just mentioned, Kevin has mentioned the country to country crisis or country to country monopoly. What exactly we are just getting from the market. So guys, कुछ नहीं होता है. अगर आपको किसी भी टोकन के बारे में पूरी स्टडी अगर आप करते हो तो guys, ये चीज आपको हैम्पर नहीं करती, because you know कि भाई उनका फ्यूचर क्या है, right? And the other thing, what is important कि भाई like meme coins like Shiba Inu and Doge coins, ऐसे coin market में आते रहेंगे guys. You just have to see कि भाई, is that coin stable in the market? Is that coin will sustain in the market? And the important part, if you are trying to get invested, that guys try to understand, अगर आप investment करते हो, don't wait to get your money vanish. If you are, अगर आप, अभी मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे यूजर्स के ऑलरेडी पैसे होंगे शिबा में, डॉज में. अगर आपने मुनाफा बना लिया ना गाइस, कभी भी मार्केट की मैं बोल सकता हूँ डिवैल्यूएशन की रेशियो को समझो. अगर आप 100 रुपए डालते हो ना, डोंट वेट फॉर 200. इफ यू आर गेटिंग 5%, 10%, गेट जस्ट स्क्वायर ऑफ इट. अब यू वेट फॉर द सेकंड करेक्शन गाइस. और इट्स डोंट बी ग्रीडी. डोंट बी ग्रीडी यार, बिकॉज आज हम फॉरेक्स में है, हमारे पास तो लोग ऐसे आते कि फॉरेक्स में, क्रिप्टो में पैसा डबल होता है एक महीने में. गाइस, मैं उनको एक ही बोलता हूँ, ये आपको सिर्फ भगवान दे सकता है, हम नहीं दे सकते. क्रिप्टो इज नॉट अ 25 दिन वाला. Yes, it's simple. So it's all these things. So try to understand, guys. Crypto, it's a very lovely, it's a very high demanding और decentralized thing है. मुझे पता है कि इंडिया में क्रिप्टो बिल्स को लेकर बहुत सारे ब्ला ब्ला कुछ अलग अलग चीजें सुनने में आ रही है, लेकिन गाइस, डिसेंट्रलाइज का मीनिंग एक ही होता है कि वो किसी के हाथ में नहीं है. It's all of us. So try to understand this, and I wish everyone should get engaged in this market, because try to understand US हमारे पॉपुलेशन से 10 times लेसर पॉपुलेशन है, फिर भी वहां के लोग 40 to 50, 60% पीपल आर मेकिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड डूइंग ट्रेडिंग्स इन द फाइनेंशियल मार्केट. और हमारे इंडिया में उनके कंपेयर में वी हैव 10 times larger population than to only 2% active traders and investors we are having. So guys, we just want to make our youth, our residentials, our country peoples to get engaged in the financial market. क्योंकि भाई जीडीपी तभी बढ़ता है जब मार्केट बढ़ता है, और जीडीपी को बढ़ाने वाले हम ही लोग हैं. Try to understand this. So basically our viewers have to be more crypto aware if they have to sustain. Correct. So Kevin, your last words for the session. I will just add to Akash's point, which is, like focus on the fundamentals. Look at, like if the cryptocurrency or the particular token is solving, like a real world problem,
for example, Ripple, Stellar, they solve the banking wallet issues, and they are also getting partnerships from legitimate Web2 companies like Visa and other banking institutions. So look at like fundamentals like that. Also, like you should keep in mind that crypto doesn't operate in isolation. All geopolitical issues do affect it. Yeah. And meaning, so yeah, like keep those two, and also like like educate yourself about cryptocurrency, educate yourself about blockchain. There's like a lot of opportunity in the space. Okay. So basically, we have heard from our speakers also, guys, कि आपको किस तरीके से research backed रहना है और crypto के बारे में aware होना है, then you can all start investing. और यही हमारे advice words हैं आपके लिए. So I guess we are good for now. और आज का session बहुत ही ज़्यादा engaging था. ये I am personally saying, because when I see smiling you both guys, this was totally a I was flabbergasted with this session. Really good. It went really good. It's really, we are feeling really glad to hear with you, and because as I have formed one firm, that is WEALTHNEX Private Limited. Basically, why I have formed this firm, because I just want to literate people in the financial market. Wow. Because अगर जब तक लिटरेसी नहीं आएगी ना, तब तक मार्केट में ये लूज फॉल्स आते रहेंगे. आपको कोई ना कोई आके बताता रहेगा, आप कुछ करते रहोगे, उसमें आपको फिर वापस कुछ ड्रॉबैक्स आएंगे. तो गाइस, जस्ट प्लीज, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने का एक ही जरिया है, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी. इस चीज को समझ लो गाइस. सो that's why we are just making, Tushar is here, Kevin is doing a very grateful job. These guys are working for you basically, because knowledge spread karna, awareness spread karna, bhai, this is a contribution to society. That's what we want to do. Because आप लोग तभी कमा पाओगे भाई जब आप हमसे कुछ समझोगे और आप किसी को समझाओगे. To try to understand these things. Cool. So with the smiling faces and at this note, we would like to sign off from today's session. Thank you, Aakash and Kevin, for joining us today. Thank you, Tushar. Thank you, Kevin. Thank you, guys. Thank you, Aakash. Thank you, Tushar. Yeah, thank you, guys. Yeah. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.